Hello everyone. Today I'm going to talk about GATE examination. Before starting that, I would like to introduce myself. I am Prerna Bansal. I have done my masters from IIT Bombay and I have 4 years of teaching experience and 2 years of industrial experience. And for the past 2 years, today I'm going to talk about GATE because of the COVID-19 situation. You might have heard from a lot of friends and people that they have lost jobs and everything. So it will help you to broaden your prospect. So that is why I'm going to talk about GATE examination. So let's start with the presentation. What exactly is GATE examination? It stands for Graduate Aptitude Test in Engineering. So it's an all-level, it's an entrance examination on all India level. So which is conducted by IISc and IITs combined, and it is conducted in the month of either in January or February. So GATE score is valid for 3 years. इसका मतलब आपने इस साल एग्ज़ाम दिया, वो अगले साल भी आप उसको यूज़ कर सकते हो एडमिशन के लिए, उसके अगले साल भी. सो इफ़ यू गॉट अ जॉब एंड आपका स्कोर अच्छा था लेकिन आपने जॉब स्टार्ट कर दिया, यू कैन ज्वाइन MTech after 1 year if you did not like your job. For 3 years, so it's not bad to keep an option valid. What exactly it is used for, GATE examination? It is used for various postgraduates program. You can enter in IITs, NITs, all the centrally funded institutes. So either you can go for MTech or dual degree, MTech plus PhD or PhD. And the other thing which you can do through GATE examination is that you can enter into PSUs. PSUs are government-owned organizations where more than half of the company is owned by the government. So it's a government job. It has more stability and everything. So for examples of few major PSUs are ONGC, IOCL, BHEL, and etc. In fact, in some of the PSUs, they even demand that if you have a GATE score, they give you promotions on that. Now, कौन दे सकता है ये एग्ज़ाम? So ये एग्ज़ाम, the one who have a degree in engineering, technology or architect, or the one who are in final year like you guys. जिनके पास मास्टर डिग्री है साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस में, और या फिर वो लोग भी फाइनल ईयर में. जो फाइनल ईयर में हैं उनको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज दैट यू आर इन द फाइनल ईयर टू appear for the examination. And after you qualify the examination, you just have to prove that you have a degree or certificate, provisional degree, अगर आपको तब तक डिग्री नहीं मिली है तो. सो GATE एग्ज़ाम क्यों दें? सबके मन में ये क्वेश्चन होगा. सबसे पहला तो PSUs का रिक्वायरमेंट हो चुका है. PSUs गवर्नमेंट से है, तो अभी के सिनेरियो में COVID-19 है जहाँ पे लोग जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब लूज़ कर रहे हैं. गवर्नमेंट सेक्टर में यू डोंट लूज़ योर जॉब, हाईली स्टेबल. सो पैकेजेस प्राइवेट सेक्टर इतना आपको कहीं से भी स्टार्टिंग नहीं देगी. PSU का एवरेज इज़ 12 to 18 lakhs.
पर ईयर, प्लस आपको हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि अगर आप बीमार पड़ जाते हो आप जॉब नहीं लूज़ करते हो, प्राइवेट सेक्टर में यू डू। देन PSUs में अगर आप देखें तो बार्क, NHAI, ONGC, IOCL, Power Grid, then there are small PSUs like RITES and all, HSCC, everywhere you have a great job stability plus the health benefits. So if you or any one of your family member gets sick, they pay for it, you don't have to pay from your pocket. दूसरा, गेट एग्जामिनेशन से आप MTech, MS, PhD कर सकते हो या फिर डुअल डिग्री MTech प्लस PhD। दूसरा कॉलेज है नीटी, बॉम्बे में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो इट्स अ मैनेजमेंट कॉलेज। सो आफ्टर यू जॉइन दिस, average package out there goes of 12 lakh per year. If you're good, you can earn much more. So then there are other foreign institutes which also accept GATE examination. You don't have to give GRE for those colleges, and those are some of the very reputed colleges which I'll explain in detail in my further slides. तो अभी आप लोग सब 4th ईयर में हो, क्या करना है आगे, कुछ तो सोचा होगा सबने। प्लेसमेंट्स में या तो जॉब करना है, स्टडी करना है इंडिया में या फिर बाहर, या फिर डू यू वांट टू लाइक फैमिली बिजनेस में जाना है, कुछ तो करना है। सो कोविड-19 के सिचुएशन के कारण हमें अभी काफ़ी कुछ कंसिडरेशन करना पड़ेगा। सो मैं 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उसके बारे में बात करती हूँ। इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट सिचुएशन। उस समय पे मैसिव ले ऑफ हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था एंड एवरीथिंग, बहुत लोगों ने जॉब लूज़ किया था। सो बट थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी बेटर आफ्टर सम टाइम। सो till the situation get better, you have to make yourself busy. I'm not saying everybody will not get the job or everybody will get the job. Scenario has changed greatly after COVID-19. So we have to take into account and we have to broaden our perspective कि हम लोग we have to make our future bright and healthy. So वो कैसे करना है? तो I'm just giving you an example that this can be another scope which you can go for it, and personally I have done it and it's really great. The environment, this I've done masters. I'm not favoring you to do a master degree, but being in a college like IIT Bombay has broadened my perspective so much that I would just like to share my experience with you guys. So वही, अब जब तुम लोगों की